Let's take a while just to understand assets. It's one of those words जो बहुत frequently discuss होता है, but is very rarely understood, especially in the context of a services company. So simply put, assets are things you make money from. The opposite of it is a liability, the things you lose money from. So if you own a car that you yourself drive, you put a lot of money into it. It's not making you money. अगर वो घर पे खड़ी है खास तौर पे तो. So it's a liability. But if the same car is rented out, then that's an asset. So that's sort of the highest level litmus test of what an asset is. It's something that helps you make money. अब services के context में you really need to ask yourself this question repeatedly, and we'll look at a list in a minute. uh, कि exactly क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आपने पैसे बनाए हैं. The obvious things are generally fairly easy to catch कि जी मैं it's this guy or that tech or something. But you really need to drill in a little bit more. Our list is about 100 and some assets that a typical services company has. And those are all important and those are not generally obvious. मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का काम बेसिकली एसेट्स को संभालना होता है. सो हम एनालॉजी लेके चलते हैं कि जी मेरा कार रेंटल का मेरा एक बिजनेस है. तो मेरा बेसिक एसेट तो कार है और ड्राइवर्स हैं. मे बी मेरा ऑफिस हो, मे बी मेरी मार्केट में रेपुटेशन हो. इन सब के ज़रिए मैं पैसे बनाता हूँ. मैंने एक मैनेजर रख लिया. तो मैनेजर साहब जो हैं वो उनका काम ये था कि अब वो मेरे इन चीज़ों का इनको मैनेज करें. बट व्हाट डज दैट एंटेल एग्जैक्टली? सो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उनसे कहता हूँ मैनेजर साहब आपने जो है ना मेरे एसेट्स को मेंटेन करके रखना है. आपने इंश्योर करना है कि इतने कंट्रोल्स हों कि मेरे एसेट्स प्रिजर्व्ड रहें. सो मेरी गाड़ी जो है वो उसका तेल बदला हुआ हो, वो उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसमें ट्रैकर लगा हो, उसमें मेरे उसकी लॉग बुक्स मेंटेन हुई हों. सो मेरे जो एसेट्स हैं वो मेंटेन रहें, वो मेरे एसेट्स ही रहें. सो पहला काम तो आपका ये है. दूसरा काम आपका ये है कि अब आप जो कर रहे हैं बिजनेस में उससे मेरे एसेट्स बढ़ें. आ, और इसी से मुंसलिक तीसरा काम कि आप उनको फुली यूटिलाइज रखें. मेरी गाड़ी है, आपने मेरी गाड़ी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अब मेरी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए. वो 99% ऑफ द टाइम जो है ना वो सवारी लेके कहीं जा रही हो और वो किराए पे चढ़ी हो, क्योंकि उसी से मेरा एसेट यूटिलाइज होगा. राइट. सो द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट इज की. And then obviously from that utilization you will make money, and from the money you will buy more assets. So that's how you strengthen the business, is by just increasing the number of assets you have. When you judge and you measure your manager by how many assets he has built up, this is the strength of the business. Obviously if you have shareholders there might be other metrics, लेकिन बिजनेस तगड़ा वही तभी होता है जब उसमें उसके असासे बेहतर इस्तेमाल हो रहे हो और ज़्यादा हो रहे हो. सो जस्ट समथिंग आई स्किप्ड. जब हम कहते हैं कि एसेट्स हेल्प यू मेक मनी, I by that I mean help you make a profit. Now to make a profit, you can really do this two ways. You can either increase your revenues, आपकी इनकम बढ़ जाए, or you can decrease your expenses, or both. तो दोनों सूरतों में जो बॉटम लाइन है आपकी प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा. सो एसेट्स कुड बी समथिंग जो आपको आपके खर्चे कम कर देते हैं, बट एसेट्स कुड बी समथिंग जिससे आपकी कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, या जो कस्टमर्स पैसे दे रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्सेट्रा. सर्विसेज में क्योंकि इट्स नॉट सो ऑब्वियस, सो हियर्स अ फ्यू क्वेश्चंस यू वांना maybe think about. Go to for example your HR department and say कि आप ये बताएं कि आप आखिर मैनेजर हैं एचआर के, एग्जैक्टली किस चीज़ के मैनेजर हैं आप, क्या मैनेज कर रहे हैं आप. एंड यू probably get like some abstract answer
कि जी मैं तो एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करता हूँ या मैं एचआर के स्टाफ को मैनेज करता हूँ, समथिंग लाइक दैट. बट इन रियलिटी एचआर हैज़ इट्स ओन assets. So you might have CV databases, or you might have pre-screened CVs or relationships with university alumni or something. इसके ज़रिए आप HR वाले जो हैं वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टू द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी. सो अब बहुत ज़रूरी है कि वो मैनेजर्स इन चीज़ों को रिकग्नाइज करें और संभालें. सो आस्क देम दैट सिंपल क्वेश्चन. फिर ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि आखिर क्या था जिससे आप पैसे बना रहे थे. तो आप कहते हैं हाँ जी मैंने सीवी था मेरे पास, उसको मैंने स्क्रीन किया, फिर वो सिलेक्ट हुआ, उस सिलेक्शन से काम हुआ, उस काम से पैसे आए. सो इट्स बिट ऑफ अ 4 स्टेप प्रोसेस, लेकिन दैट एग्जिस्ट. अब अगर इसको आप सिंपली या ज़्यादा क्लियरली देखना चाहें तो आप ये कहें कि एचआर एक बिजनेस है और वो फॉर एग्जांपल टेक्निकल टीम्स के साथ इन बिजनेस है. ठीक है, so he needs to make money. The HR department needs to make money, and for it to sell something of value to the technical teams, what does it need? That's what it needs. It needs a bunch of CVs. Uh, it needs a screening process to shortlist them, uh, and any processes and SOPs that go along with that. See? So इन चीज़ों के ज़रिए वो उसमें से पैसे बना सकता है. एक और सवाल दैट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इज के किस चीज़ में आपने बहुत सारा टाइम लगाया है. जनरली इफ़ देर इज़ एन एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो रिपीटेडली हो रही है तो उसका किसी को फ़ायदा था, और वो जो रिपीटेडली एक्टिविटी हुई चले जा रही है उसकी आउटकम में कुछ प्रोड्यूस अमूमन हुआ होता है. एटलीस्ट दिस इज व्हाट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस डू इज they produce some kind of an outcome. So if you are repeatedly making, let's say, project proposals, you're making 50 project proposals a week or something, then a proposal template is an asset, because that is something कि जो जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, या वो बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है किसी और का इन अ सिमिलर सिचुएशन. अगर आप एचआर के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जी लोगों की स्क्रीनिंग पे हमने बहुत टाइम लगाया. तो क्योंकि हमने लोगों की स्क्रीनिंग पे बहुत टाइम लगाया तो जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो एक एसेट है, उसके बगैर पैसे नहीं बन सकते थे. सो उसको अगेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज कंट्रोल होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट that process is frequently used. So if you've made a screening process for this sort of weird job description that never gets used, that's not an asset. But if it's a, let's say, the web development position जिसके लिए आप बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, वो प्रोसेस बार बार गुजरता है, then that's an asset. I recognize that. That's the first thing. The other question is, if it's, sometimes it's still not obvious. uh, the another way to look at it is कि अच्छा अगर मेरी टीम में से कोई बंदा जा रहा हो, या मैं द मैनेजर मैं अपनी पोस्ट किसी को हैंड ऑफ करके जा रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली क्या हैंड ऑफ करके जा रहा हूँ. मैं लेट्स इमेजिन अ ट्रांजिशन सेशन टू अ न्यू मैनेजर. व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू बी हैंडिंग ऑफ. उसको कुछ ज़रूरी चीज़ें दे के जाऊँगा ना, वो ज़रूरी चीज़ें अमूमन आपके हिसाब से होती हैं. और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो जनरली एक लास्ट लिटमस टेस्ट ये होता है कि अच्छा फिर अगर ये ना हो तो फिर मुझे कोई नुकसान होगा. As a lot of people do not understand what their true assets are till they're gone, you know. uh, और जब वो चले जाते हैं तो फिर ख्याल आता है कि यार ओहो, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ थी.
सो द नेगेटिव टेस्ट इज ऑल्सो प्रीटी गुड इंडिकेटर, खासतौर पे अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप ब्लैक बॉक्स की तरह उनको देख रहे हैं, तो उसको इस तरह ही देखना कि ये वाली इनपुट अगर मैं निकाल दूं तो फिर क्या होगा, तो वो ब्लैक बॉक्स एक नेगेटिव आउटकम शो कर देता है आपको। तो ये आपके बेसिक डेफिनेशन है ऑफ एन एसेट। अब हम एक क्विक सा ओवरव्यू जो है सर्विसेज की कंपनियों के एसेट्स का भी। So I'm sharing with you a list of some assets of a typical software house. Don't consider this list to be exhaustive, um, and this list is not specific to software services companies only. Most services companies will have similar assets. Um, और टिपिकली सॉफ्टवेयर कंपनी से आप पूछें तो वही आपको यही कहेंगे कि जनाब हमारे लोग ही हमारे एसेट्स हैं। और जनरली उनका मतलब टेक्निकल लोगों से होता है। बट we will come at we'll come to that at the end of this. Uh, the way this spreadsheet is structured is it starts to look at the core services that uh, a services company is built on. So administration, finance, governance, HR, marketing, sales, ट्रेनिंग, ये चीज़ें वो हैं जो जिनकी ऊपर एक सर्विसेज की कंपनी खड़ी होती है, उसके ऊपर टेक्निकल लोग बैठते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं और फिर उसमें से पैसे बनाते हैं। तो अभी हम ज़रा कोर सर्विसेज की बात करें, ज़्यादातर इस डिस्कशन में फोकस कोर सर्विसेज ही का है। सो आप कहते हैं जी हमारा दफ्तर जो है वो हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट असासा है। जब लड़का नया नया काम शुरू करता है उसके पास वो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जिससे वो एक बड़ी कंपनी बना के खूब से पैसे बना सके। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक असासा है हमारा। तो हम कहते हैं अच्छा जी एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली क्या असासा है आपका? तो हम कहते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मेज़ें, कुर्सियाँ, पार्टीशन एंड डोर्स एंड व्हाट नॉट। योर बिल्डिंग लीज माइट आल्सो बी एन एसेट। अगर आपने बड़ी अच्छी जगह कोई ऑफिस ले लिया हुआ है, तो दैट इज़ समथिंग कि जो आपके लिए एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग में सोलर लगा लिया, तो सोलर से आप पैसे बना रहे हैं, आपके पास कुछ वर्किंग कैपिटल पड़ा है, वो भी आपके एसेट्स हैं। मे बी यू हैव ट्रेनिंग इन SOPs ऑन हाउ टू how your administrative staff should behave and how frequently you need to check your generator's oil or something. All of these things will have very significant impact on the reduction of your costs. So that becomes a very important thing. Then the people you know, by networks I don't mean IT networks, I mean people networks. Um, it's the people you know. You know, this one food vendor you know, or this one uh, ग्रोसरी सप्लायर यू नो, जो आपको बहुत अच्छा सस्ता काम करके देता है, दैट्स एन एसेट। दैट रिलेशनशिप, दैट कनेक्शन is an asset. And then one thing you very rarely consider is all your failures are your assets. So बहुत सी गलतियां जो आप पहले कर बैठे हैं, वो आपका एक असासा है। और उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको संभाल के रखना, उनको सीखना, उनसे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर यू टू कंटिन्यू टू मेक मनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर है एक बंदा उसने कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, वो चला गया, तो जब अब अगला है वो शुरू से शुरू हो जाएगा, वो वही गलतियां दोबारा करेगा। सो वो गलतियां जो आपने की थी वो हर दूसरा आपका कंपेटिटर भी करेगा। तो उससे आपको अगर आप सीख सकें सिस्टमेटिकली तो वो आपका असासा बन जाती है। इसको हम अपने यहाँ कैप्टन्स लॉग कहते हैं। इसी तरह आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें आपकी sort of बुक्स हैं। I'm just rushing through these. If you want to see the details of these and a more detailed discussion, this Excel sheet is in the governance folder on uh, the OneDrive.
um, so finance and accounting के अंदर similarly you have your reports and templates and books. uh, आपके obviously account receivables collections इस तरह की तो चीज़ें होती हैं, these are very obvious assets. आपके कैश एसेट्स हो सकते हैं जिसको आपका डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा हो, आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, टैक्स के आपके जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस बने हुए हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत क्रिटिकल एसेट्स बन जाते हैं आपके. एंड द सेम स्टफ अगेन, ट्रेनिंग, एसओपीज, नेटवर्क्स, फील्ड एक्सपीरियंसेस. अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉलम चल रहा है स्केलेबिलिटी का. दिस इज वर्थ टॉकिंग अबाउट. There is something called marginal cost uh, in business, which means कि for every new customer that I add, मेरे खर्चे कितने बढ़ जाते हैं. This is a really important metric to indicate कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी, will it start to develop economies of scale, यानी कि वो बड़े होने से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या बड़े होने से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी. तो आप देखें कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो बहुत हाईली स्केलेबल हैं और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्केलेबल नहीं हैं. सो एडमिन के केस में फॉर एग्जांपल, वी नो दैट ट्रेनिंग एंड एसओपीज आर अ वेरी हाईली स्केलेबल एसेट, बिकॉज एक बारी मैंने एसओपी बना दिया है, मैंने अपना ट्रेनिंग का एक लेट्स से कोर्स करिकुलम प्रोसीजर बना दिया है, तो वो मैं अब इन्फिनिट नंबर ऑफ अटेंडेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा. वेर एज अगर मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो फॉर एवरी न्यू कस्टमर आई ऐड आई नीड अ सीट. तो देयर इज नो वे अराउंड दैट. इट्स नॉट लाइक के कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे और सीट्स नहीं बढ़ेंगी. तो इसमें जो मेरी फेवरेट एग्जांपल है ना, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है. कि आपके पास ट्रेनिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास दो एसेट्स हैं. एक फॉर एग्जांपल लेट्स से इन पर्सन ट्रेनिंग्स हैं और एक आपके पास प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन एलएमएस टाइप ट्रेनिंग्स हैं. अब दोनों ट्रेनिंग एसेट्स ही हैं, लेकिन जो इन पर्सन ट्रेनिंग्स हैं वो हर 5-10 लोगों के पीछे आपको एक ट्रेनर चाहिए, वर्सेस जो ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, वो एक ट्रेनिंग जो है हज़ारों लोगों के ऊपर अप्लाई की जा सकती है. So clearly the online trainings, even though they might be slightly less effective, are highly scalable and hence as a business are a very desirable class of assets to possess. Uh, so let me just sort of slowly scroll through these ताकि आप इनको देख सकें. I would just pause on it to look at the assets of a particular department. Uh, and if you want to look at the details and discuss them, like I said, the sheet is in the governance folder and you can talk to the respective departments. This video is not meant to be a comprehensive list enumeration of the assets, but it's just meant to give you a sense of what sort of assets your department can possess. So you need to introspect on that to get your particular list in your particular scenario.